Hey, hi everyone, this is Aswani, and today we will be talking about Sir JRR Tolkien and the entire universe of Middle Earth that he has created. So, uh, this is gonna big because I will be covering different aspect of JRR Tolkien and his stories. So, I will be dividing this into several chapters. So, the first chapter we will be talking about who is J.R.R. Tolkien and how his stories are different from other fantasy writers. तो फैंटेसी की तो यही प्लस पॉइंट है बिकॉज एवरी ऑथर हैज़ समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू देयर वर्ल्ड एंड उनकी पर्सनैलिटीज़ उनका सब कुछ उस वर्ल्ड में दिखता है बिकॉज दे हैव टू क्रिएट द वर्ल्ड ओके सो पहले फैंटेसी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं फैंटेसी को बेसिकली टू मेजर बोर्ड कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड लो फैंटेसी एंड हाई फैंटेसी सो व्हाट इज़ लो फैंटेसी लो फैंटेसी are the stories which are coming from our world like उनका world building हम लोगों के world के जैसा होता है so it is kind of similar to our world or our universe and follows the fundamental law of science and history so जो history में हम लोगों के events हुए हैं independence and all those things will be reflected into those stories और उनका history different नहीं होने वाला and added to all these things they add some elements of magic or some unearthly stuffs that get the readers hooked into the story. For example, if we talk about Harry Potter, so Harry Potter is set in our world, like Harry lives in our world, brought up in our world, then after several age, he got transported to Hogwarts, and that is a whole another realm of magic where we got introduced to magic and all those stuffs. But it is still based in our universe. So Harry Potter is a low fantasy, and there are several other stories that come in this category. So high fantasy क्या है इसका just उल्टा. So high fantasy are the stories where author dictate and establish the science, flora, fauna and history everything. Basically उनको एक world create करना होता है like God has created this world and set up all the rules and everything. So एक फैंटेसी ऑथर अपने उस वर्ल्ड को सेटअप करता है उसके लिए रूल्स बनाता है उसके लिए सब कुछ लाइक एवरीथिंग सो अब इन सब के बीच में टोकन कहाँ स्टैंड करता है सो Sir J.R.R. Tolkien is a classic fantasy writer. His love for literature and language is immense. At the very young age, when we struggle to read and write one or two language, he has created his own language. Yes, and through his lifetime, he being in command and controlled over 35 plus major language including the ancient and historical language like Norse mythology or modern English, of course. So, yep, he has a linguistic characteristic. और उन्होंने 15 प्लस लैंग्वेज इन्वेंट की हैं राइट 15 प्लस लैंग्वेज सो इट्स ह्यूज एंड उसमें से 2-3 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनका ग्रामर बहुत रिच है सो दोज लैंग्वेज कैन बी स्पीक इन आवर वर्ल्ड विदाउट एनी failure. So there are people like huge token fan who learn those language and use in their daily routine. So yeah, अब तुम लोग बोलोगे कि ओके his personal thing like he likes stories he like literature and everything so how this contribute into being him एज अ राइटर क्योंकि उनको अल्टीमेटली तो एक ही लैंग्वेज में बुक लिखनी है ना सो नहीं ऐसा नहीं है सो टोकन की जो स्टोरीज़ हैं उनमें उनका द लव ऑफ लिटरेचर लव ऑफ लैंग्वेज दिखता है और द स्टोरी ऑफ मिडल अर्थ इज़ अक्रॉस ओवर डिफरेंट एजेस ओके सो उसमें बहुत सारे रेसेस हैं कास्ट हैं कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट ऑरिजिन है सबका डिफरेंट तरीके से रहते हैं सो दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड गेस व्हाट दोज 15 लैंग्वेजेस आर फॉर दीज कैरेक्टर्स सो पहले उन्होंने लैंग्वेज बनाया फिर उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए लाइक दे नीडेड द कैरेक्टर्स हु कैन स्पीक देयर लैंग्वेज क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनकी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर टू मैनी लैंग्वेज टू लर्न एंड टॉक अबाउट सो ही इन्वेंटेड द कैरेक्टर्स ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड जिसमें उनके लैंग्वेज को लोग यूज़ कर सकें उनके बारे में बात कर सकें और
सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सो अभी जो मिडिल अर्थ में दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस, लाइक अगर फेमस रेसेस की बात करें तो एल्व्स आ जाते हैं, डॉव्स हो गए, मैन हो गए, ऑक्स हो गए, एंट्स हो गए। सो इन सब के लिए अलग अलग लैंग्वेज, और इवन एल्व्स के लिए दे हैव अ डायलैक्ट, लाइक सब बोली जिसे बोलते हैं ना, लाइक रीजनल लैंग्वेज, तो उनके लिए डायलैक्ट भी हैं। सो ओवर 8 to 10 डायलैक्ट्स फॉर दैम। और फिर दो पॉपुलर लैंग्वेज यहाँ से उठ करके आती हैं, एल्विश एंड सिंद्रियन। So these are two popular language which have a very rich grammar in themselves and can be spoken in the real world, like our world. Okay. So ये था टोकन के बारे में थोड़ा सा। अब मूव करते हैं सेकंड सेगमेंट में। सो इफ़ यू वांट टू स्टे ट्यून तो सेकंड सेगमेंट जाके देख लेना। ओके, बाय।